education. Who will read? Who wants to read education? Always make sure that whenever you are putting your education in the resume, don't start with class 10 first. First start with your current educational qualification. ठीक है? उसके बाद नीचे जाते रहिए. Okay? 12, 10, whatever. ठीक है? So that is another nice way of presenting your self, presenting your data. Because usually interviewer will be more interested in qualification, checking what is your current qualification. Okay, what are you doing currently? They will be more interested in that. So, you know, you will have a lot of resumes, Rahul, which are there. We will talk about them. So there is nothing called a perfect resume. The next one, awards and certificate. Who will read? Raise your hand quickly. Raj Singh. Raj. Yes, ma'am. Padhiye. Ma'am, awards and certificate, academic, musical, athletic, and or other recognition. Recognitions. So कुछ भी awards या certificates अगर आपको मिला है related to academics या art and culture या sports, anything that you've got, you must write about those as well. Okay.
now. What is the meaning of the word social recruiting? Okay, so when we recruit candidates, when recruiters recruit candidates by using social platforms as talent database or for advertising, that is called social recruiting. Social recruiting is recruiting candidates by using social platforms as talent database or for advertising. Social recruiting uses social media profiles, blogs, and other internet sites to find information on candidates. That's right. So for example, मान लीजिए Google को hire करना है. Okay, let's say for example, Google wants to hire people for a particular project. Okay, तो वो क्या करती है? वो सारे social platforms में they look for suitable candidates. They advertise, and advertise करने के बाद वो check करते कि कौन उसमें जाके देख रहा है. Okay, and then they get in touch with those people. Okay, social refers to the process of recruiting candidates through social media platforms like LinkedIn, Facebook, Twitter, and other websites. Correct, correct. Yes. So yes, they check the eligibility of candidates. And yes, it is easy to reach more potential candidates and showcase why people should work for your company. So basically, social recruiting is in trend right now. Okay, it is very, very popular. And so it is important that you are able to make best use of it. So हम क्या कर सकते हैं? Like I said, it is important that we build a strong network, because when we build a strong network, we start following companies, we start knowing what the companies are doing, वो क्या क्या practices कर रहे हैं, उनकी cultural practices क्या है, उनकी नई initiatives क्या है. कल आप जब उस कंपनी की इंटरव्यू देने जाएंगे, you will be able to share that these are some things that I know that the organization is doing. So इससे interviewer को लगेगा that you are a very keenly interested person in the organization. Okay, so what can you do? You can follow companies, you can join different groups, you can attach yourself, get connected to different connections of companies or corporates, be in tune with industry news. Okay, very important. You should be aware. Are you all reading newspapers or ye khatam ho gaya? Are you all keeping yourself up to date? Yes, no? या MPC program हो गया और उसके साथ साथ वो भी खत्म हो गया? Tell me, are you all aware about what is happening in the world, what is happening in the different areas? Politics, science, technology, economics, business, sports. Yes, good. Yeah, so Arjun, I am glad that you're honest. Please keep updating yourself. Read the newspaper every day. It will hardly take you more half an hour. अगर आप half an hour ध्यान से with complete attention newspaper हर दिन पढ़ेंगे, you will have so much more knowledge. Yes, that's right. Russia and Ukraine are almost on the verge of war. There are many countries which are trying to calm Russia down so that they don't start a war against Ukraine. That is one of the most important and very, very critical news
ग्लोबल न्यूज। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ चल रहा है राइट नाउ। विंटर ओलंपिक्स इज ऑन इन चाइना। in winter Olympics, a big concern is a lot of players have been infected by coronavirus and they are very, very upset. They are extremely upset क्योंकि चाइना में उनका जो facilities है, they are not happy with those facilities. Yes, election in our country across 5 states. That is again a hot news right now. अभी वो final पड़ाव चल रहा है. Parties are trying to put their best foot forward. Yes, Lata Mangeshkar, she passed away a couple of days ago. So I'm so glad, Saurav, that you are aware. It is important that you know. ओके क्या हो रहा है. अदरवाइज ये जो पूरा हम 2 घंटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इट विल बिकम अ वेस्ट, राइट? सो start being aware, okay? And that is where we spoke about a good preparation. Prepare well. Unless you are well prepared, you will not be able to apply, right? So prepare well with not just your academic knowledge, also about current affairs, general knowledge. Second point is create a very, very strong network. LinkedIn में account रखिए. Know which company is doing what kind, so have connections with companies, relevant companies. Recommendations मैंने आपको कहा है already. Try and get recommendations from people. अगर आपने कहीं पे internship किया है, उनको बोलिए आपके बारे में कुछ अच्छा recommendation दे. आपने कैसे काम किया है? How did you work over there? What was the experience? उनको कैसा लगा था आपका काम? अगर if you feel कि this person was very happy with your work, ask him to write about you on LinkedIn in your account. So इससे क्या होगा? It will become a recommendation. So जब recruiters देखेंगे आपकी प्रोफाइल, तब उनको आपकी recommendations भी दिखेगा. Go for job email alerts, ताकि आपको कोई भी relevant job की ईमेल के बारे में पता चले. अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप किया है, उनके बारे में अच्छे से, what were the learnings? जो इंटर्नशिप आपने किया है उसमें आपने सीखा क्या है, उसके बारे में लिखिए. कहीं पे लिख के उसको पढ़िए. ओके, गो थ्रू इट सो दैट इंटरव्यू में आपको पूछा गया तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंसर दे पाए. Make yourself available. And how can you do that? Be in the social media, the relevant social media platforms like LinkedIn. Then put your resume in job search companies, job portals, okay, so that companies can find you. And of course, build trust and credibility. That is very important. Self-brand building, very important. अगर आप अपने आप को present नहीं करेंगे सही तरीके से, how will you build your networking skills? So it is important that you present yourself properly. सबके साथ बातें कीजिए, connections build कीजिए, strong connections कीजिए, ताकि you get more opportunities to give interviews and crack interviews. All right. Remember, like I told you, where do hiring managers and recruiters, where do they look for people? देखिए, look at this. Recruiters make most of their hires through the following online networks. Look at this. 79%. Okay, recruiters, they look for 79% recruiters look on LinkedIn for candidates, okay, suitable candidates. 26% recruiters look out for Facebook. Facebook में वो देखते हैं about 26%, and then followed by 14% on Twitter and 14% on candidate blog. अगर आपका खुद का कोई blog हो तो वो भी देखते हैं recruiters.
ओके अगर कुछ सूटेबल कैंडिडेचर उनको मिल जाए वहां से तो वो हायर कर लेंगे, राइट? सो मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, मेक योर सेल्फ अवेलेबल, डोंट बी लेजी। ये आपका फ्री टाइम है, ये फ्री टाइम को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। All right. So with that, we come to the end. So what are some things that I want you to start doing? The first thing that I want you to start doing is एक अच्छा video resume की script बनाइए, because video resume is in trend right now. Practice कीजिए and make the final best video resume. अगर आप चाहते हैं तो Alfie को आप भेज सकते हैं आपका best video resume, not more than 1.5 to 2 minutes. उनका email ID आपके पास है तो उनको आप भेज सकते हैं, so that she can look at it. Okay. So these are some points that you can remember. Do you have any questions for me? You can ask me any questions now. Yes. Any questions that you have in mind? मैम आई हैव क्वेश्चन। Yes, आफ्ताब। मैम हमने जैसे अगस्त में सर एमपीसी का मैम किया था हमने क्लास, तो मैम हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो मैम हम रेज्यूमे में अवार्ड एंड सर्टिफिकेट कॉलम में मैम बताएंगे ना इसके बारे में? Of course, of course. और अगर आपको पूछा जाता है कि ये सर्टिफिकेट किस बारे में है, यू कैन ऑलवेज से दैट दिस इज अ प्रोग्राम दैट वी हैड अटेंडेड इन विच वी लर्नड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स like attitude building, communication building, personality building, then technical skills jaise email writing, then how to do a proper group discussion. Yes, ma'am. Okay, right. So ये सब आप बता सकते हैं. How to give an interview. What are the kind of questions that an interviewer can ask. हमारी mock interviews भी हुई थी. So this is a program which has given us a lot of confidence. तो इस तरह से आप कह सकते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. Video resume is to introduce myself. Portfolio for what? Resume काफी है ना? और क्या चाहिए आपको? Portfolio? What kind of portfolio are you talking about? हमने कोई सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, कैटिया ये सब सीखा है, तो उसके ऊपर हम अपना डिजाइन हम क्या क्या बना लेते हैं वो। तो वो आप आपकी जो अपस्किलिंग जो है, the other skills that I know, वहां पे आप डालेंगे ना। एक तो हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपने लिखा कि what other skills do I have. So other skills में वहां पे आप डाल देंगे that AutoCAD में आपका क्या क्या डिजाइनिंग आपको पता है वो सारा आप वहां पे डालेंगे. The heading will be other skills. ठीक है? What is the best suitable dressing sense? Formals. So full shirt, light color, ideally white color shirt, and dark blue, black pants with a black belt for men. And if you want to wear a tie, you can wear a tie also. So that is a perfect dress code for interview for men. And for women, you can either be in Western formals. So you can wear Western formals, yani ki white, light color, full sleeve shirt, top, and black pants, dark blue, or dark gray pants, and leather shoes. Okay. And for girls, you can also be in Indian formals. So Indian formals are either a sari for interview, simple sari. Don't wear a very gorgeous sari. You're not going for a wedding. You're going for an interview. So a simple sari with minimum
jewelry, just one chain and small earrings, that's it, and watch. या आप सलवार कुर्ता भी पहन सकते हैं, no problem. Okay, so this is a perfect dress code for interview. And always carry a folder, and in the folder have all your resumes. Yes, but it should not, ज़्यादा flowery template use मत कीजिए. Keep it very professional. Okay, keep a very professional looking template. It should not be too artistic and too flowery and all. Any other question? It is not necessary, पर आप दे सकते हैं. अगर आप चाहते हैं तो आपका फोटो आप डाल सकते हैं. No problem. How to join Mahindra? Go on Mahindra's portal and look up for their career options. क्या career options है उनका? Okay, सौरभ, career options में जाइए, उनकी LinkedIn में follow कीजिए, recruiters कौन है देखिए, उनको follow कीजिए. Okay, so do all that. अगर कैंपस में आ गए तो कैंपस से आपका रिक्रूटमेंट होगा. Okay, so don't worry. You have to see, आज की तारीख में ना, you have to build a strong network. That is very important. Okay, so you must build a strong network, क्योंकि recruiters are looking for candidates everywhere. Okay, so ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैंपस में ही देख रहे हैं, वो सोशल प्लेटफॉर्म्स में भी देखते हैं. ओके, तो क्रिएट योर लिंक्डइन अकाउंट, रेज्यूमे डालिए वहां पे. जो रेज्यूमे आप ऐसे बना रहे हैं उसी रेज्यूमे को वहां पे डालिए, नो प्रॉब्लम. ओके, एंड देन स्टार्ट लुकिंग फॉर रेलेवेंट कंपनीज. उनके साथ अपने आप को जुड़िए, जॉइन देयर ग्रुप्स. Okay, build connections. So do all of that. What else? What other questions do you have in mind? Ask me. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है इससे. इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल, अगर वो चाहते हैं कि आपको वो इंटरव्यू करना चाहते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, राइट? And then if they want your photo, they will ask you for your photo. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है. बट yes, जो भी आपकी जो डिस्प्ले प्रोफाइल फोटो है वो एक फॉर्मल फोटो रखिए. ओके, तो एटलीस्ट उनको पता चलेगा. आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आपका व्हाट्सएप फोटो देखेंगे तो उनको पता चलेगा, अच्छा ये बंदा ऐसा दिखता है. सो हैव अ प्रोफेशनल लुकिंग photo, like how Saurav Kumar Jha, he's wearing, he has a formal wear. He's in formal wear in his DP, in his display photo. So usi tarah you can have a display photo like that. Similarly, Mayank also, I can see Mayank also has a formal, he's wearing a shirt. So you can have that kind of a photo also. Okay. So zaruri nahi hai that you need to put a photo. If you want to, you can. If you don't want to, that's fine. If the company wants to, they will ask you for a photo. Any other question? This is your time. Yes, Rahul Kumar Behra, yes, you will put your hobbies in your resume. Okay. That is something that you will put. They want to know you, right? So put. And remember, मैंने ये पहले भी आप लोगों को कहा है that जो आपका हॉबी है वही लिखिए. किसी ने आपको कह दिया कि बुक रीडिंग हॉबी डाल दे, पर आपका बुक रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, प्लीज मत डालिए. ओके, 1 मिनट लगेगा इंटरव्यूअर को ये पता करने में कि आप वाकई बुक रीडिंग आपका हॉबी है या नहीं. सो डोंट डू दैट.
What else? What other questions do you have in mind? Yes ma'am, I have one question. Yes, Aftab. मैम जैसे ड्यूरिंग इंटरव्यू में हम कहते हैं कि हम आपकी कंपनी में 4 to 5 years काम करेंगे, अगर वो पूछते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो मैम हम ये कहते हैं हम 4 to 5 years काम करेंगे और मैम हम ज्वाइन भी हो जाते हैं, बट आफ्टर 6 month एंड 1 year अगर हम मैम वहाँ से छोड़ना चाहें और फिर वो कहें कि आपने तो कहा था कि हम 4-5 साल काम करेंगे, फिर मैम क्या जवाब होगा हमारा उस टाइम? वो ऐसे नहीं पूछेंगे आपको। अब अगर आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ऑब्वियसली आप जाएंगे। यस मैम। तो अभी आप पहले इंटरव्यू का सोचिए। ओके, थैंक यू मैम। या ओके। सौरभ, सर्फिंग थ्रू इंटरनेट एज अ हॉबी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद इंटरव्यूअर आपको बहुत पूछेगा, ओके क्या आप सर्व करते हैं, किस तरह की कंटेंट आप देखते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, व्हाट do you like in that content? So you must be ready for all those questions, and if you think you can give all the answers, go ahead, no problem. ठीक है, you must be ready for these questions. ऐसे questions वो पूछेंगे आपको। आपको सर्फिंग क्यों अच्छा लगता है इंटरनेट पे, क्या सर्च करते हैं आप, what kind of content do you like, what kind of content do you not like, why do you like that content, why do you not like this content? तो इस तरह के सवाल वो पूछ सकते हैं। ये कंटेंट से आपको क्या फायदा हो सकता है, आप क्या सोचते हैं इस तरह की कंटेंट के बारे में। सो ऐसे क्वेश्चंस वो कर सकते हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। राहुल, आई विल नॉट हैव दैट आंसर, अल्फी विल हैव दैट आंसर, सो आपको अल्फी के साथ इस बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। I will not have that answer. Okay, any other question? Any other question that you have in mind? Kashish, Harsh Kumar, Dheeraj, do you all have any other question? No, ma'am, no question. Okay, All okay, good. all good, very good. Okay, great. So on that note, then I would want to wish you all the very best. If you have any questions, you can always ask me. My email ID is there on the email that Alfie sent all of you. Let me just quickly check. I think it is there. Can you all see my email ID? No ma'am. Okay, just a minute. Or you can write to Alfie also. Yahoo! Yes, yes. Yes. Ma'am, Yahoo. please send it chat group. Okay, so so what you can do is you can, yes, so Saurav has shared the email ID. Thank you, Saurav. So you can write to Alfie or you can write to me if you have any questions. But if you have questions related to anything to do with MPC, you have to write to Alfie. अगर आपका कुछ पर्सनल सवाल है, जैसे मैम ये सवाल का आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ, अगर ऐसा सवाल इंटरव्यू ने पूछा तो मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं, इस तरह के सवाल अगर आपके मन में है तो उसकी आंसर्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमपीसी, व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास, विल आई हैव समथिंग मोर, ऐसे सवाल होंगे तो अल्फी से बात कर लीजिए, बिकॉज अल्फी इज द कोऑर्डिनेटर, शी इज द कोऑर्डिनेटर फॉर एमपीसीज क्लासेस। ओके, so all the best to all of you. Please utilize this time. ये टाइम आपके लिए वापस नहीं आएगा, ठीक है। सो अच्छी तरह से ये फ्री टाइम जो अभी मिल रहा है आप लोगों को, इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, नेटवर्किंग को
बहुत बढ़िया बनाइए. Constantly be in touch with your TPO, with your college campus, with your seniors. वो जहाँ काम कर रहे हैं ये सब पता लगाइए. All of these things and current affairs पे भी ध्यान दीजिए. All right. These are some things that I will tell you. All right. All the best and take care of yourselves and have a very, very nice year. Okay. I wish all of you a fantastic 2022. Okay. You can leave now. Bye-bye. Take care. One of them. Okay. The next one is work or project experience. What is work and project experience all about? Just give me a moment, students. Okay, right. So who will read? Who will read the next one? Harsh Kumar, Mayank. Okay, Rahul Pariye. Work or project experience, short-term jobs, internships, volunteer work with a company name. Right. So what are we saying? We are saying that जो भी आपने internship किया होगा, short-term jobs, internships, volunteer work with a company name, anything that you've done, you must put all of that. Okay. और ऐसा मत सोचिए कि इसका तो मेरे पास कुछ certificate नहीं है तो ये डालूं या ना डालूं. डाल दीजिए, सब कुछ डाल दीजिए एंड सामने से बता दीजिए कि सर इसके लिए मेरे पास सर्टिफिकेट है पर इसके लिए मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है. और जो काम के लिए मान लीजिए ऐसा कुछ इंटर्नशिप ने आपने किया है या शॉर्ट टर्म जॉब किया है जिसका आपके पास कुछ एविडेंस नहीं है, अगर ऐसा हुआ then tell them that sir I don't have evidence because whatever reason, वो reason बताइए और फिर बताइए that but if you want, you can ask me questions. I will answer. Okay, I will answer the questions. किस तरह का काम मैंने किया था, इससे मैंने क्या सीखा है, मैं आपको सारी डिटेल्स में बता सकता हूँ. So you please make sure that you all put everything. ऐसा बहुत बार हुआ है इंटरव्यूज में that I have asked somebody what kind of work have you done and they said मैम किया तो बहुत कुछ है पर मैंने वो डाला नहीं है रेज्यूमे में. So I asked क्यों नहीं डाला? So they said because मैम मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है. संजीव कुमार क्या कर रहे हो आप? संजीव कुमार, Sanjeev, please put your camera off. You're distracting the other students, Sanjeev. Okay, so remember, कुछ भी काम अगर आपने किया होगा, कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम किया होगा, कोई भी काम इंटर्नशिप काम किया होगा, शॉर्ट टर्म जॉब किया होगा, please mention everything in your resume. Okay, and जहाँ पे एविडेंस नहीं है सिंपली से सर इसके एविडेंस मेरे पास नहीं है, इसके कुछ पेपर्स नहीं है, बट अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैंने ये ऐसे ऐसे काम किया है. उसके बाद इट इज द इंटरव्यूअर्स डिसीजन. Let him take a call, let him decide. But आप पहले से assume मत कर लीजिए कि नहीं मुझे ये नहीं दिखाना है. Okay, be very clear about this. Next is skills. Okay, who will read skills? Who will read skills? Rahul, you've read just now. Can I see some other fresh hands, please? Parvesh Kumar. Do you want to read? Saurav Parho. Any one of the Sauravs. Jha or Saurav, any one of you. Read the next one.
Who is reading? रीडिंग में अभी भी आप लोगों को इतना लेजीनेस होगा तो कैसे चलेगा? हर्ष पढ़िए. Skills, soft skills, being responsible, hardworking, energetic, outgoing. Technical skill, MS Office, Tally, Python, C++. करेक्ट. सो दीज आर एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स यानी कि आपकी स्ट्रेंथ्स. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? सो यू कैन राइट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम अकाउंटेबल, energetic, dedicated. These are all examples of soft skills or strengths. Okay, but please don't write leader or leadership. Leadership is not a soft skill. I have said this to all of you before also. Leadership is a result. Okay, हम leader क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें टीम स्किल्स है, क्योंकि हमें ability to organize everything है, क्योंकि हमें ability to handle a situation है, इसीलिए हम, क्योंकि हम पंक्चुअल है, क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड है, इसीलिए हम लीडर बनते हैं. सो आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू राइट लीडरशिप स्किल एज अ स्ट्रेंथ. दैट इज नॉट अ स्ट्रेंथ. A strength is hardworking, responsible, accountable, well organized, punctual, team player, all of these, agile, quick learner. These are all examples of strengths, yeah, soft skills. And the other is, अगर आपकी कोई technical skills है वो भी आप लिखेंगे, जो भी आपने upskill किया है वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे. And finally, your personal and contact information. Who will read this one? Who will read? Swati, read. Read, Swati. Personal and contact information. Help the employer to understand your location of residence and the information for further contact. And that is the reason why it is important that you put your personal and contact information. Okay. Thank you, Swati. So, these are some elements which are very important and they should be there in your resume. Okay. Now, keeping that in mind, let me ask you, have you all designed your resume? Have you all created your resume according to any design? Have you all done that? I have seen some of your resumes. Yes. So remember, a very, very important point is your resume represents you, and that is why there are some important points that we need to keep in mind. So Sumit, read the first 2 points. Use font like Times New Roman. नहीं, उसके पहले यहाँ पे ये लाइन पढ़िए सबसे पहले. All details should be accurate. Okay, wait, Sumit, wait. So this is a line that I want all of you to remember. ठीक है, जो भी लिखेंगे आपके रेज्यूमे में वो सारा जेन्युइन इंफॉर्मेशन होना चाहिए. एक भी गलत इंफॉर्मेशन मत डालिए. इंटरव्यूअर को 2 मिनट लगेगा पता करने में कि आपने सही इंफॉर्मेशन डाला है या गलत इंफॉर्मेशन डाला है. ओके, बिकॉज वो सालों से इंटरव्यूज ले रहे हैं, हजार कैंडिडेट्स की इंटरव्यू ले चुके हैं, तो उनको फटाफट पता चल जाता है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है. सो मेक श्योर दैट योर डिटेल्स आर ऑलवेज एक्यूरेट. यस, रीड, कंटिन्यू रीडिंग, सुमित. Use font like Times New Roman, Verdana or Arials, font size 11 or 12. So this is something that I have shown you before also, जब हमने training curriculum cover किया था आप लोगों के लिए. So we are showing it again for you. Please remember, Times New Roman, Verdana, Arial, these are examples of formal fonts, and point size should be 11 or 12. 11 से कम नहीं, 12 से ज़्यादा नहीं. Okay, so these are some important points that you should remember. I want a fresh hand to be raised. Who will read next? Ravinder Kumar. Ravinder.
Yes. Who wants to read next? Mayank, do you want to read? Mayank Kukreja, do you want to read? Okay, read Rahul Behra, read. Only the heading should be bold. And not more than? 1 to 2 pages. Correct, not more than 1 to 2 pages. And read the last 2 lines also. Keep your resume neatly in a folder. It should not be folded or dog-eared. Correct, right. So very important that the headings should be in bold. And आप लोग freshers है, no problem Mayank. But fix your mic. All of you, please keep your audio and video proper. आपकी फोन की ऑडियो और वीडियो सही होनी चाहिए, क्योंकि कल अगर आपका वीडियो इंटरव्यू हुआ तब आप इंटरव्यूअर को ये नहीं कह सकते कि मेरा फोन का कैमरा काम नहीं कर रहा है, मेरा फोन का माइक काम नहीं कर रहा है. सो दे विल से बैड लक. ठीक है, तो प्लीज गेट योर ऑडियो एंड वीडियो ऑफ योर फोन और डिवाइस whichever you are using to give इंटरव्यू. अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ा तो इन सब सारे चीजों को सही रखिए. ठीक है, just get them all fixed. Not just Mayank, I'm saying this to everyone. I'm saying this to all the students. Okay, और आप लोग फ्रेशर्स है, आपका रेज्यूमे should not be more than 1 to 2 pages. हाँ, इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए. So ज्यादा लंबा मत लिखिए. Okay, to the point लिखिए. Remember content and design, very very important. क्या आपने लिखा है और किस तरह से आपने प्रेजेंट किया है आपकी डिटेल्स को. Keep your resume neatly in a folder. Okay, प्रिंटआउट्स लेके एक प्लास्टिक फोल्डर के अंदर ऐसे रखिए, फोल्ड मत कीजिए. ऑलराइट, ऐसे फोल्ड मत कीजिए तो फिर एक क्रीज आ जाएगी. डोंट लेट दैट हैपन. स्ट्रेट रखिए पेपर्स ऐसे फोल्डर के अंदर. इट शुड नॉट बी फोल्डेड और डॉग ईयर्ड. डॉग ईयर्ड यानी कि डॉग के ऐसे कान होते हैं ना. सो पेपर के एकदम ऊपर इसको ऐसे ईयर मार्क मत कीजिए. ओके, फोल्ड मत कीजिए. पेपर के एकदम ऊपर के तरफ इनको फोल्ड मत कीजिए या पूरा फोल्ड मत कीजिए. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. उसको स्ट्रेट रखिए. ओके, टेक प्रिंट आउट्स एंड पुट देम स्ट्रेट इन योर फोल्डर, प्लास्टिक फोल्डर, व्हाटएवर फोल्डर. ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन राहुल. ओके, so these are some important points that we need to remember. These are some अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. Have you all heard of these names? क्या है ये बताइए. Have you all heard any of these names? Zeti, Canva, Resume Genius, CV Maker. CV Maker. Can you tell us a little about CV Maker? क्या है वो बताइए. मैम रिज्यूमे मेकर है वो. हाँ, करेक्ट. Anybody else? Any has? उसके अंदर पहले से बस आपको डिटेल भरना पड़ता है. Correct, absolutely. So these are some design apps or you know, software apps which you can use to create or design your resume. आपको आपकी details इनमें भरना है and automatically it will create a beautiful resume for you. Okay, so if you want you can take a screenshot of this slide and you can try out. जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, so this is how you can design your resume. Remember, your resume is all about you. ओके, सो अच्छी तरह से अपने आप को शोकेस कीजिए. अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट्स है उनको हाईलाइट कीजिए. अगर आपकी अचीवमेंट्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, जो है उसी को हाईलाइट कीजिए. जो नहीं है उसके बारे में कहानियां मत बनाइए. ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. आप फ्रेशर है, आपसे ज्यादा वो कुछ पूछेंगे नहीं. आपकी बेसिक जो एटीट्यूड है, आपकी बात करने की तरीका है, आपने किस तरह से अपना डिटेल्स को प्रेजेंट किया है, बस यही देखेंगे वो.
ओके आप कितनी पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, these are the things that they will see. So it is not necessary that बहुत कुछ आपको लिखना जरूरी है, पर अगर आपके पास अचीवमेंट्स है तो उनके बारे में जरूर लिखिए. ओके सौरभ, कीप फोटोज रेडी, फोटोज रेडी रखिए. कुछ कंपनीज दे आस्क फॉर फोटोज, मोस्ट कंपनीज रादर ask for photos. So if you want, you can attach a photo and send. Okay. Okay. So what is the difference between resume and cover letter? Cover letter is basically an introduction. Okay. एक introductory पेज जो लोग अपने बारे में देते हैं और उसके साथ वो एक स्नैपशॉट अटैच करते हैं एज अ रेज्यूमे. दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. और रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे में आप पॉइंट बाय पॉइंट अपनी डिटेल्स भरते हैं. सो सिंस यू ऑल आर फ्रेशर्स, आई विल एडवाइज दैट आप लोग रेज्यूमे बनाएं. You don't need to really put a cover letter. अगर कंपनी कहती है कि अपना एक कवर लेटर भी दीजिए तो एक समराइज्ड कुछ दे सकते हैं, पर यूजुअली वो पूछते नहीं है. Okay, usually they don't ask. Cover letter is more when you go to a senior position, तब वो बोलेंगे कि एक कवर लेटर दीजिए अपने रेज्यूमे के साथ. तो आप एक समरी दे देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर दिस जॉब इज दिस, मुझे ये करना है, दिस इज माय विजन, ये मेरा विजन है, ये मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है, एंड इसके साथ मैंने अपना रेज्यूमे अटैच किया है, तो उसके साथ आप एक रेज्यूमे अपना अटैच कर देते हो. सो रेज्यूमे इज पॉइंट बाय पॉइंट description of you, and cover letter is more like an introduction about you. ठीक है? Which is like a paragraph. That's it. Okay. So this is all about resume. जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी, accurate इंफॉर्मेशन दीजिए और अपने बारे में जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह से हाईलाइट कीजिए, एंड मेक अ नाइस, गुड लुकिंग, नीट लुकिंग resume. That is very important. Remember, content and design. Okay, content should be highlighted, not the design. So आपका content main है, डिजाइन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए. ओके, कि बहुत ये कोई मूवी नहीं बना रहे हैं आप. सो डोंट फोकस ऑन पुटिंग टू मच ऑफ फिल्टर्स एंड डिजाइन, यू नो, आइटैलिक एंड वो सब मत कीजिए. आपका कंटेंट सिंपल होना चाहिए. व्हेन आई से डिजाइन, आई मीन फॉर्मेटिंग नीट होनी चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, आपका फॉर्मेट नीट एंड क्लीन होना चाहिए. ओके, हेडिंग के नीचे आप थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, उसके बाद दोबारा एक हेडिंग, उसके नीचे आप अपना डिटेल्स डाल रहे हैं, इस तरह से. ओके, दिस टेक्स अस टू समथिंग कॉल्ड वीडियो रेज्यूमे. तो वीडियो रेज्यूमे आप लोगों को याद है, हमने वीडियो रेज्यूमे डिस्कस किया था. डू यू ऑल रिमेंबर? एनी आइडिया? डू यू ऑल रिमेंबर वीडियो रेज्यूमे? याद है या नहीं? यस. सौरभ कुमार झा, आज आप बहुत कम बात कर रहे हैं, क्या बात है? कोई गेस्ट आ रहे हैं इसलिए मेरे को बाहर निकल के बोलना पड़ रहा है. अच्छा, ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड. ओके, ऑलराइट. सो यस, वीडियो रेज्यूमे क्या होता है? नहीं, पीपीटी फॉर्म में नहीं, इन द फॉर्म ऑफ ओके, पीपीटी यू मीन अ प्रेजेंटेशन? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, अर्जुन? Yes, no, Arjun. सिर्फ चेहरा दिखाने से नहीं होगा. Yes, okay, fine, I got it. So yes, you're right. So जब हम आजकल, especially nowadays, video resume is in trend because of online, because of COVID. A lot of companies want to take video resume, तो उसमें उनको कैंडिडेट दिख भी जाता है और कैंडिडेट अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है वो भी उन्हें पता चल जाता है. And in very short, maximum 2 minutes, 2 मिनट से ज्यादा तो बोलना ही नहीं चाहिए. 2 मिनट बहुत होता है. 2 मिनट में आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हो वो देखना चाहते हैं.
right? So in a lot of companies nowadays, video resume has become a trend, right? So what are some points that we need to remember about video resume? Let's find out. Okay, so how many points are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Okay, can I have 3 fresh hands raised? Deepak, do you want to read? Deepak? Deepak, do you want to read? Deepak Singh? Deepti? Feroz? Yes, ma'am. Deepti Pariev, read the first 3 points. Pay attention to your attire and environment. Be comfortable and maintain a pleasant expression throughout. Look into the camera while speaking. Correct. So you can see when I'm speaking to you right now, I'm looking into the camera. मैं ऐसे नहीं बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं बात कर रही हूँ. I'm looking straight into the camera and speaking to all of you. Why? Because when you look at the camera and speak, जब एम्प्लॉयर या इंटरव्यूअर आपका वीडियो रेज्यूमे देखेगा, उसे आपका चेहरा डायरेक्टली दिखेगा, राइट? उसे आपका ऐसा वर्जन नहीं दिखेगा. He or she will be able to see your face directly. So very important that you look into the camera when you're speaking, right? The second point, be comfortable and maintain a pleasant expression throughout. आराम से बात कीजिए. और वीडियो रेज्यूमे अगर आपको बनाना है, 2-3 बार थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, वीडियोस बनाइए, देखिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है. गलत जो हो रहा है, यू कैन गेट रिड ऑफ इट, और जो सही हो रहा है उसको और बेटर बनाइए. सो दिस इज हाउ you can finally the final cut जो होगा आपका वीडियो, that is the one that you will send out. So be very comfortable. You should not look nervous. You should not look very conscious. Okay. And the first point is pay attention to your attire and environment. Yani ki be in formal clothes. Okay. At least your upper attire. Agar aapka sirf itna dikh raha hai. Okay. Then your upper attire should be in formals. Right. And योर एनवायरनमेंट, यानी कि पीछे का जो एनवायरनमेंट है वो ब्लैंक होना चाहिए. कोई आगे पीछे घूम रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, इट शुड बी अ क्लियर वॉल. ओके, इस तरह से अपना वीडियो बनाइए. ऑलराइट, सो दीज आर important points that you must remember. Feroz, read the next 3 points. Feroz? Yes, ma'am. Start by greeting with a smile and speak in clear and audible voice. Be mindful of your body language. Have a relevant script that includes your education, skills, and achievement. Correct. Thank you, Feroz. So, very important that we start with a greeting and speak in a clear voice. Okay, voice clearly आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, audible होना चाहिए. Body language ज्यादा ऐसे आगे पीछे मत होते रहिए, आराम से steady रहिए. Be steady and have a positive body language. These are some important points that you must remember. Script में जैसे आप एक रेज्यूमे बनाते हैं उसी तरह रेज्यूमे में जो भी आप लिखते हैं वही आप बताने वाले हैं. That's it. Okay, so ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग बनाना है. You will just keep saying whatever you have mentioned in your resume in the form of a presentation. All right, who will read the last 3 points? Padhiye, Mayank, read. Get creative, X visual prompts. Example, visual prompts. Okay, next. Keep it short, not more than 2 minutes. End with a smile and thank you. Correct. Very good. Thank you. So
Get creative, example visual prompts, but honestly उतना ज्यादा भी जरूरी नहीं है. विजुअल प्रॉम्प्ट्स यानी कि लेट्स से अगर आप एजुकेशन कहने वाले हैं तो एक पीछे से एक आ जाता है एजुकेशन, but honestly I don't think it is really necessary because aap log freshers hai. Keep it simple. You can only say hello everyone, my name is Anandita Gonzalez and today I'm going to present my resume to all of you. My objective, my career objective is to give my best and add more value to your organization. My educational qualification is currently I'm doing my diploma in so and so, and before this I have completed my class 10 and 12 from this college or this school. A little about my strengths. I am this and this. My hobbies are this and this. I have done a lot of upskilling in these languages. So इस तरह से आप अपना एक simple सा video बनाइए presentation के तौर से and make the presentation. All right, and keep it short and simple and always end with a smile and thank you. All right, so what I'm going to do is I'm going to show you 3 very important points. The first point is, yes, that's right, short video to introduce yourself. That's video resume. So video resume के लिए you need to prepare, क्योंकि आपको बिना देखे बताना पड़ेगा ना. You will have to look into the camera and say. So prepare, अच्छी तरह से prepare कीजिए script. ओके उसके बाद उसे प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस करने के बाद उसे प्रेजेंट कीजिए. ऑलराइट, मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियोस दिखाए थे ड्यूरिंग योर करिकुलम. राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ sample video, but before that let me put my camera off so that it comes clearly to all of you. Let me just show it to all of you. Just give me a moment. Okay,